मु शक्ति प्रसाद मो चैनल शक्ति एजुकेशन को समस्त स्वागत। ए वीडियो रे हम इंग्लिश रो एट द हाई स्कूल आम एमसी को सब डिस्कसन करने पूर्व समस्त कही रखुचे समस्त वीडियो को लाइक कर सांग मान सहित सेयार कर जो मैंने फास्ट टाइम चैनल को विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करदेव। प्रथम क्वेश्चन देखिए कौन देछि at 18 गांधी मैट्रिकुलेटेड फ्रॉम कोट से मैट्रिकुलेटेड माने मैट्रिक एग्जाम पास करते ना राजकोट हाई स्कूल ऑप्शन बी है। देन देखिए एट द हाई स्कूल इज ए एन कौन एट द हाई स्कूल एटा कौन आंसर हम कौन ऑप्शन बी है ऑटोबायोग्राफी कहार ना एम के गांधी ऑटोबायोग्राफी है कौन एट द हाई स्कूल। देन देखिए मोहनदास ऑलवेज एंजॉय द अफेक्शन और लव ऑफ कहार माने कहार अफेक्शन लव को से एंजॉय करते आंसर हम कौन ऑप्शन बी हिज टीचर्स। देन देखिए सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डैश वेर सेंड टू पेरेंट्स एवरी ईयर प्रोग्रेस आउ गोटे सर्टिफिकेट कौन ना कैरेक्टर। देन देखिए 5 नंबर फॉर्चुनेटली मोहनदास नेभर पास्ट डैश माने से कोथरे से पास कर पर नथले ए बैड सर्टिफिकेट सॉरी पास्ट एटा पढ़ले फॉर्चुनेटली मोहनदास नेभर पजेस्ट मान से केबे हेले अधिकार करनथले कोन गोटे बैड सर्टिफिकेट रो। देन देखिबा गांधी और मोहनदास डैश आफ्टर पासिंग आउट द सेकंड स्टैंडर्ड ओन स्कॉलरशिप ओन प्राइजेस ओन द अफेक्शन ऑफ हिज टीचर्स ओन एडमिरेशन एडी आंसर कोन 6 नंबर ऑप्शन बी जो ओन प्राइजेस। 7 नंबर देखिबा व्हाइल इन द 5th एंड 6th स्टैंडर्ड्स मोहनदास ओन कोन से कोन जितले आंसर कोन ऑप्शन सी स्कॉलरशिप्स। गांधी थैंक्ड गुड लक मोर देन हिज डैश फॉर द अचीवमेंट ही हैड एबिलिटी टैलेंट एफिशिएंसी एक्टिविटी एटी आंसर कोन ऑप्शन ए जो एबिलिटी। व्हेनेवर मोहनदास ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप ही वुड बी डिलाइटेड वेरी मच सरप्राइज्ड ऑब्सेस्ड कंफ्यूज्ड एटी आंसर कोन 9 नंबर वेरी मच सरप्राइज्ड। देन देखिबा गांधी एज ए स्टूडेंट गाइडेड हिज टीचर डैश वेरी कॉशियसली ऑनेस्टली क्लेवरली सिंसियरली आंसर कोन ऑप्शन ए जो वेरी कॉशियसली। मोहनदास हैड नो हाई रिगार्ड फॉर एटी आंसर कोन ऑप्शन बी जो हिज एबिलिटी। देन देखिबा व्हाट ब्रॉट टीचर व्हाट ब्रॉट टीयर्स फ्रॉम गांधीज आईज ए ट्रिपल मिस्टेक द लीस्ट लिटिल मोरल डिफेक्ट पनिशमेंट फ्रॉम हिज टीचर्स बैड कैरेक्टर एटी आंसर कोन ऑप्शन बी है जो द लीस्ट लिटिल मोरल डिफेक्ट। देन देखिबा 3 नंबर वंस मोहनदास रिसीव्ड डैश एट स्कूल कौन से रिसीव करथिला ऑप्शन सी है जो फिजिकल पनिशमेंट। देन देखिबा गांधी डिड नॉट mind the punishment since it was considered his desert. Here the word desert means it desert mean hela kono na reward or punishment one deserves to get. Then देखिबा 15 दोराबाई इदुलजी जिमी was Gandhi's headmaster when he was से को क्लास रे पढ़ला बेले ता आंसर कोन ऑप्शन सी हे जिवो स्टैंडर्ड 7th क्लास हला बेले को से कोन थिले दोराबजी इदुलजी जिमी बस तांकर हेडमास्टर थिले। दोराबजी इदुलजी जिमी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड मेड क्रिकेट एंड डैश कंपलसरी क्रिकेट आउ कोटा को से कंपलसरी कर देथिले ता आंसर कोन जिम्नास्टिक्स। बिसेट्स बीइंग ए गुड टीचर ए मैन ऑफ मेथड द हेडमास्टर दोराबजी इदुलजी जिमी वाज ए मैन ऑफ मैनर डिसिप्लिन वर्ड लेटर्स एटी आंसर कोन 17 ऑप्शन सी है जो डिसिप्लिन। बिफोर बीइंग मेड कंपलसरी बाय दोराबजी इदुलजी जिमी गांधी नेवर पार्टिसिपेटेड इन आइदर फुटबॉल कोथरे के क्रिकेट से भाग नै नथले। देन देखिबा व्हाट मेड मोहनदास स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट और फुटबॉल कोटा तांको स्टे करथले ना हिज साइनेस तांग लाजकोळ स्वभाव जो से क्रिकेट को फुटबॉल को खेल नथले बा स्टे अवे होतले दूगे रहतले। गांधी हैड ए फॉल्स नोशन दैट तांको फॉल्स नोशन कोन थिला ना जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। देन देखिबा अकॉर्डिंग टू मोहनदास बोथ फिजिकल ट्रेनिंग एंड मेंटल ट्रेनिंग शुड हैव इक्वल प्लेस इन दी कोठी इक्वल प्लेस ते दरकार ने करिकुलम रे। देन देखिए 22 मोहनदास एलोननेस और स्टेइंग अवे फ्रॉम जिम्नास्टिक ऑफ क्रिकेट वाच कहीं से माने स्टे होइक रहउतले टू सर्व हिज फादर आफ्टर स्कूल। देन देखिए बाय सर्विंग हिज फादर मोहनदास गॉट से कौन पाउतले ऑप्शन सी है जो डायरेक्ट कंपलसरी एक्सरसाइजेस। देन देखिए मोहनदास वुड हरी होम एंड बिगन टू सर्व हिज फादर सून आफ्टर एट आंसर ऑफ कौन ऑप्शन ए सून आफ्टर द क्लोजर ऑफ हिज स्कूल। देन देखिबा वन सैटरडे आफ्टरनून मोहनदास हैड टू टेक पार्ट इन कोथि से टेक पार्ट नोतले जिम्नास्टिक क्लासेस। देन देखिबा 26 में मोहनदास वाज डिसीव्ड बाय डैश आज ही रीच्ड द जिम्नास्टिक क्लास लेट आंसर कोन 26 रो ऑप्शन बी हे जिवो द क्लाउड। देन देखिबा व्हाट डिड मोहनदास
व्हाट डिड मोहनदास फाइंड आफ्टर रीचिंग स्कूल इन द जिम्नास्टिक क्लास कौन से जाइए माने कौन से पाइले ऑप्शन बी हो द बॉय हैड ऑल लेफ्ट देन देखिबा व्हाट पनिशमेंट डिड मिस्टर गिमी इनफ्लिक्ट ऑन मोहनदास फॉर हिज एब्सेंस इन द जिम्नास्टिक क्लास जॉइन करबे जो कौन पनिशमेंट देथले 28 आंसर ऑफ कौन ऑप्शन बी हो टू पे ए फाइन ऑफ 1 or 2 आनर्स माने गोटे आना दी आना फाइन देबा पई कहथले द प्रॉब्लम विथ मिस्टर जिमी वाज दैट तांकर प्रॉब्लम कौन थला एटी आंसर कौन ऑप्शन ए ही कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ देन देखिबे 30 मोहनदास वाज कन्विक्टेड ऑफ मोहनदास कौन कन्विक्टेड होतिले द आंसर कौन ऑप्शन बी टेलिंग लाइज मिछ कथा कहे पे कौन कन्विक्टेड होतिले मोहन क्राइड इन डीप एंगुइशमेंट आज मोहन क्राइड इन डीप एंगुइशमेंट कहीं कहते ना ही कुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस तांको जो इनोसेंस टाको से प्रूव कर पार नथिले एट एक्चुअली क्वेश्चन बोले द प्रॉब्लम विथ मिस्टर गांधी ही कुड नॉट प्रूव हिमसेल्फ से निज को प्रमाण कर पार नथिले बोले एटी तांकर प्रॉब्लम थिला देन देखियो मोहन क्राइड इन डीप एंगुइशमेंट आज ही कुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस एटा वाला 32 देखिबा हमें What did Mohandas learn after he was convicted of lying? It is 32 to right answer of option C. A man of truth must alone be a man of care. Then देखिए 33 Mohandas was exempted from taking part in exercise since it answer on 33 option B. His father requested to the headmaster needing Mohandas presence at home after school. Then देखिए a faint है कौन slightly unclear recollection that Mohandas had was that it answer on 34 option D है he finally succeeded in getting the fine remitted after being convicted of lying Mohandas learned that dash must also be a man of care it answer on a man of truth 35 option D haba a man of truth must also be a man of care then देखिए 36 I am still paying the penalty of another neglect what sort of neglect is Mohandas paying को neglect से पे करथले एटी 36 आंसर अब कोन ऑप्शन ए हेजिबो हिज बैड हैंडराइटिंग पे 37 देखिबा हमें अर्लियर मोहनदास हैड फॉल्स नोशन और आइडिया दैट तार कोन आइडिया थिला 37 आंसर अब कोन ऑप्शन डी हेजिबो गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन देन देखिबा वेयर डिड मोहनदास सी द ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन कोडी दिन देखिले इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट इंडिया साउथ अफ्रीका एटी आंसर कोन 38 रो ऑप्शन डी हेजिबो साउथ अफ्रीका मोहनदास रिटेन द नोशन दैट गुड हैंडराइटिंग वाज नॉट ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन अंटिल को पर्यंत ऑप्शन बी ही वेंट टू इंग्लैंड जो पूर्व पर्यंत से पाउतले मोहनदास वाज ashamed of himself and repented of his neglect what sort of neglect statement को neglect से को माने repented पश्चाताप करबा कोटा कोथि में से पश्चाताप करथले आंसर कोन 40 रो ऑप्शन डी हे जो नेग्लिजेंस इन हैंडराइटिंग जो हैंडराइटिंग से नेग्लेक्ट करथले सेथि पय से रिपेंटेड कले पश्चाताप करथले according to Gandhi before learning to write children should learn it learn the art of से कौन लर्न करे दरकार आर्ट ऑफ कौन हो ऑप्शन सी है जो ड्राइंग लेटर मोहनदास लर्न दैट कौन से लर्न करथिले गुड हैंडराइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट डिड मोहनदास फील व्हेन ही वाज व्हाट डिड मोहनदास फील व्हेन he saw his bad handwriting से माने बैड हैंडराइटिंग देखुले कौन से फील करथले एडी आंसर कोन 43 ऑप्शन डी ashamed and repented देन देखिए 44 डैश वाज ए मोर डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मोहनदास कोटा गोटे डिफिकल्ट सब्जेक्ट थला मोहनदास को पे आंसर कोन ऑप्शन सी हिजो संस्कृत मोहनदास हैड नथिंग टू गेट बाय हार्ट और मेमोराइज इन डैश ज्योमेट्री मैथमेटिक्स संस्कृत पर्शियन एडी आंसर कोन 45 रो ऑप्शन ए जो ज्योमेट्री देन देखियो द प्रॉब्लम विथ मोहनदास इन संस्कृत वाज दैट तांको पे संस्कृत जो प्रॉब्लम कोन थिला ही हैड टू लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट इन इट मोहनदास फेल्ट डिसहार्टेंड ऑन एंटरिंग द स्टैंडर्ड को क्लास से एंटर कला पर डिसहार्टेंड फील करथिले 4th 6th 3rd 10 एडी आंसर कोन 47 ऑप्शन सी हे जो 6 डैश वाज ए हार्ड टास्क मास्टर डैश वाज ए हार्ड टास्क मास्टर एटी आंसर कोन ऑप्शन ए द संस्कृत टीचर देन देखिबा देयर वाज ए सॉर्ट ऑफ राइवलरी गोइंग ऑन बिटवीन द संस्कृत टीचर एंड द पर्शियन टीचर द अंडरलाइंड वर्ड मींस जो राइवलरी मींस ला कोन कंपटीशन देन देखिबा द पर्शियन टीचर्स वाज वेरी गुड considerate and kind
lenient, loving, affectionate एटी आंसर कौन 50 ऑप्शन सी जो lenient. मोहनदास फाउंड द सब्जेक्ट पर्सियन रैदर सॉफ्ट इंटरेस्टिंग कंफर्टेबल इजी एटी आंसर हम कौन ऑप्शन डी हो इजी. देन देखिए आम 56 52 डैश टेम्प्टेड मोहनदास टू सीट इन द पर्सियन क्लास वन डे एटी आंसर कौन 52 ऑप्शन बी हो द इजीनेस ऑफ द पर्सियन सब्जेक्टेड. द संस्कृत टीचर टर्न्ड डैश ऑन सीइंग मोहनदास इन द पर्सियन क्लास एटी आंसर हम कौन ऑप्शन वेरी सैड. मोहनदास बिलोंग टू ए ब्राह्मण फैमिली, ए क्षत्रिय फैमिली, ए वैष्णव फैमिली, ए जैन फैमिली एटी आंसर कौन 54 ऑप्शन सी ए वैष्णव फैमिली. द संस्कृत टीचर आस्क्ड मोहनदास डैश to come and sit in the Sanskrit class again, to remove his doubt, not to learn the language of Sanskrit, to take advantages from the language. The answer of 54 option A, to come and sit in the classes again. Then the 56, the kindness put me to shame. Whose kindness is stated here? Kahar kindness stated है आंसर है C है जो the Sanskrit teachers. Mohandas was grateful to his Sanskrit teacher for his affection, for his kindness, for his invitation to sit in his class, for the little knowledge he had learned from the language. The answer 57 option D, for the little knowledge he had learned from the language. 58 em देखिबा, had Mohandas not acquired the little Sanskrit, he would not have shown interest. The answer of 58 option B, in the sacred books. What made Mohandas very sad? Mohandas को गोटा very sad कर देतला for not having been able to acquire or a more through knowledge in Sanskrit. कृष्णशंकर पांड्या वाज मोहनदास कौन ना संस्कृत टीचर थे कृष्णशंकर पांड्या. वीडियो क्वेश्चन देखिए कौन दे द वर्ड हाई यूज्ड इन द स्टैंजा इज डैश ए पर्सन, ए प्रीपोजिशन, ए नाउन, एन इंटरजेक्शन और ए प्रोनाउन. राइट आंसर कौन एन इंटरजेक्शन. व्हिच पार्ट ऑफ बिकी इज केप्ट इन द फॉर्मेलिन जार बिकीज डैश इज केप्ट माने कौन ना ब्रिलियंट ब्रेन. नेक्स्ट देखिबा Vicky's brilliant brain has been kept dash in the laboratory, on the table, in a casket, in a formalin jar. In a formalin jar. Formalin is a chemical compound of hydrogen, oxygen and dash. Hydrogen, oxygen and carbon. Vicky's brain is called brilliant because it is vigorous or strong, it is healthy, it is sharp and intelligent, it is full of knowledge. The right answer is called it is sharp and intelligent. Next देखिबा Vicky's brilliant brain is feeling dash inside the formalin jar. Admired, pleasured, angered, hated. The right answer is कौन hated. People kept staring at a dash again and again. Vicky's brilliant brain. Next देखिबा why is Vicky's brilliant brain on display? Or Vicky's brilliant brain is on display dash to show Vicky's sharp mind, to prove the strength of the formalin jar, to spread awareness among onlookers, to promote knowledge for knowledge of people. It is right answer कौन ना to promote knowledge of people. Next question देखिबा the brain inside the formalin jar is talking about dash Lauren, the narrator, Vicky's parent, Vicky. It is right answer है कौन ना Vicky. Being called a specimen or model, Vicky's brain is feeling dash distant, pleasant, insulted, excited. It is right answer है कौन ना insulted. 2 years ago I was part of a living human. I stands for it Vicky's brain. Vicky's brain कहूँ ना 2 वर्ष तले मु गोटे लिविंग ह्यूमन पार्ट थी. 2 years ago Vicky was dash tumor stricken, stroke affected, fit and fine, smart and intelligent. केमती का था ना fit and fine थला. 13 नंबर देखिबा yet ended of this jar to my chargin. The underlined words chargin means है कौन chargin है कौन ना great anger. Vicky's brain ended up in the jar. This means Vicky's brain ended up in the jar. ता अर्थ है कौन Vicky's brain had to be kept in the formalin jar finally. Next question देखिबा 2 years ago Vicky was young, smart and dash. Young, smart and healthy. The expression sun, wind or rain means dash. Very intelligent question. Never, hardly, both in good or bad times, occasionally. It is right answer होगा कौन ना both in good or bad times. Vicky was very good at mathematics and dash mathematics and computer. Vicky's motto was dash no pain no gain. Next question देखिबा the proverb saying no pain no gain means dash ना without suffering there is no good result in life. Next question देखिबा Vicky's love for his parent was truly insane. एटी insane हैला कौन ना excessive. Vicky's adored or loved very much कौन ना his grandmother. तां grandmother से बहुत भल पाउतला. Vicky's grandmother had wrinkles or illness in the slow skin.
सॉरी लाइन्स इन द लूज स्किन जो बुढ़ी बुढ़ी जो स्किनटा जाकी जुक हो जाए है कौन रिंकल्स पड़ जाए एंड सी वाक्ड ऑन ए केन ये केन है कौन ना वाकिंग स्टिक। नेक्स्ट नंबर देखा व्हाइल इन कॉलेज बिकी स्टोल ए ग्लेंस एट ए डैश मिलिंद लीजा लॉरेन मुस्ताफा ये राइट आंसर हम कौन ना ऑप्शन सी लॉरेन। व्हेन डिड बिकीज हेड गो थुड थुड व्हेन डिड बिकीज हेड सॉरी व्हेन डिड बिकीज हार्ट गो थुड थुड व्हेन ही लुक्ड एट लॉरेन सीक्रेटली। What was the day like when Vicky rode his bike? What was the day like when Vicky rode his bike? Wet and rainy. Where did Vicky ride his bike? To his friend. माने कोठी से जाउथला ता फ्रेंड पाखु जाउथला। Where did Vicky's friend live? Where did Vicky's friend live? कोठी से जाउथला in the next lane. Vicky went to his friend's house to attend some ordinary work. किसी साधारण काम ପାଇଁ जाउथला। How did Vicky go to his friend on a wet monsoon rainy? ना riding his bike चले के जाउथला। What did Vicky forget to do while riding his friends to wear his helmets? हेलमेट पिंधिबा भूली जाथला। Vicky is refrained from dash while riding his bike to his friend. Vicky refrained from dash while riding his bike to his friend कौन wearing his helmet. What did Vicky meet or face on the way to his friends कौन ना an accident तार हेतला। देखिबा द एक्सीडेंट दैट विक्की फेस्ड ऑन द वे वाज डैश ब्लडी एंड फैटल। ऑल इट टूक वाज ए स्ट्रे मोमेंट इन एन द सेंटेंस मीन्स द ऑल इट टूक वाज ए स्ट्रे मोमेंट इन एन अर्थ है कौन ना एन एक्ट ऑफ मोमेंट स्टुपिडिटी ऑफ विक्कीज व्हेन ही डिड नॉट वेयर हिज हेलमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा विक्कीज यंग लाइफ वाज लॉस्ट व्हाई ना इन ए एक्सीडेंट ऑन द रोड। At Vicky's death, his family dash were overwhelmed with painful sorrow. Next देखिए हमें according to the poet, dash can or may be cause of pain suffering to commuters. ठीक है ना risky driving. Dash is the clear-cut message of the poem Formalin Jar from the Formalin Jar and drive safe. Next हम देखिए dash is the poet of the poem इटे लिखित लिखी ना डॉक्टर रितायस मानी कि ना डॉक्टर रितायस मानी। Ritas Mani is dash by profession a doctor. Dash in youth stunts the body, drinking, idling, smoking, gambling. The answer of कौन ना smoking. Lord Percy advised to be temperate in dash all things, all work, all aspects, all action. The answer of कौन all things. Next question देखिबा हमें Ellie Percy suggest to keep our character dash. हमें केमती रखिबा ना on अंटरनिस्ट रखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वी शुड बी फेयर टू आवर डैश फ्रेंड्स रिलेटिव्स एनिमीज राइवल्स। द आंसर ऑफ कौन राइवल्स। वी शुड हैव करेज टू स्टैंड अप फॉर डैश व्हाट इज गुड व्हाट इज नोबल व्हाट इज प्योर ऑल ऑफ द एबव। इट राइट आंसर ऑफ कौन ऑल ऑफ द एबव हबो। द राइटर एडवाइसेस अस टू अवॉइड ए डैश इन एवरी फॉर्म कौन में अवॉइड करबा ना गैम्बलिंग। आवर मैनर शुड बी डैश नोबल गुड कॉर्टियस और फेयर। द राइट आंसर ऑफ कौन ना कॉर्टियस हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर गैम्बलिंग इज ए मीन गेम ट्राइंग टू गेट डैश एवरीथिंग फॉर समथिंग नथिंग फॉर समथिंग समथिंग फॉर एवरीथिंग समथिंग फॉर नथिंग। गैम्बलिंग अर्थ कौन द आंसर हम कौन समथिंग फॉर नथिंग। वी शुड बी डैश टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग। द आंसर हम कौन 9 नंबर ना काइंड एंड हेल्पफुल हम। एली पर्सी वाज ए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन डैश से को देशर एजुकेशन मिनिस्टर थिले। द आंसर है कौन ना ब्रिटेन थिले एली पर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा चिल्ड्रन शुड बी बीवेयर ऑफ डैश आइडलिंग ड्रिंक गैम्बलिंग स्मोकिंग। द आंसर है कौन ना ड्रिंक। इन स्कूल्स गुड बाय द ऑथर advises peoples to make dash for hard times. The answer of कौन ना provisions for hard times. The essay schools goodbye is a dash. The essay schools goodbye is a dash. The answer है कौन एठी आंसर हम कौन ना message. एटा गोटे message. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 14 नंबर लॉर्ड यूस्टिस पर्सी बा E.R. Percy was a former minister of dash in Britain education minister से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिबा every student is attached to the school dash physically mentally morally emotionally. The answer of कौन emotionally. The writer conveys best wishes for the future of dash students life welfare career jobs. ये आंसर कौन मा welfare। 17 नंबर देखिबा कौन देछि the writer advises school living students not to think that. The answer कौन हबन education is finished by continuing education a student can have ambition to dash.
पास सक्सेड गेट फास्ट भी रिविजन एक्सेल ये आंसर कौन हम ना सक्सेड। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर डैश इन लाइफ इज नॉट इजिली सिक्योर्ड सक्सेस फेल्युअर जॉब ग्रेटनेस ये आंसर है कौन ना सक्सेस। सक्सेस इन लाइफ इज नॉट इजिली सिक्योर्ड सक्सेस कम्स बाय डैश ये राइट आंसर हम कौन ना हार्डवर्क एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एली पर्सी एडवाइस स्टूडेंट टू चूज ए प्रोफेशन विथ डैश आम कौन ग्रेटेस्ट केयर ये आंसर हम कौन ग्रेटेस्ट केयर ऑप्शन बी। The writer advises student to select a job which dash. The writer advises student to select a job which has good salary, has good scope, parent decide they like. It answer होगा कौन ना they like. Answer होगा A they like. Sorry B C they like. For doubts while making a choice for future, students should ask for advice from your dash. It answer होगा कौन ना टीचर मान एडवाइस नहीं पार। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन डैश टी कहा पर डिपेंड करे ना गुड हेल्थ पर डिपेंड करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द एसएस स्कूल्स गुड बाय द लाइन मेक योरसेल्फ स्ट्रांग टू प्ले द गेम्स मींस तम अर्थ है कौन एठी ना गेम ऑफ लाइफ एठी गेम है कौन गेम ऑफ लाइफ ना कि क्रिकेट फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें द राइटर एडवाइसेस टू अवॉइड एनीथिंग दैट डैश द हेल्थ ऑफ ए स्टूडेंट सैप सोप सिक्योर प्रिजर्व एठी आंसर होबो कौन ना सैप। स्मोकिंग इन द यूथ डैश द बॉडी रेड्यूस डेवलप 6 स्टॉन्ट्स एटी राइट आंसर होगा कौन 27 स्टॉन्ट्स। स्मोकिंग क्लाउड्स डैश स्मोकिंग क्लाउड्स द डैश ब्रेन हार्ट लंग्स इंटेलिजेंस एटी राइट आंसर कौन हम 28 ना ब्रेन हम ऑप्शन ए। 29 नंबर देखिए कौन देखिए एली पर्सी एडवाइस स्टूडेंट टू बी डैश इन ऑल थिंग्स स्मार्ट टेम्परेट इंटेलिजेंट डिपेंडेंट एटी राइट आंसर हम कौन 29 ना टेम्परेट। The deadly enemy of health and efficiency is dash ये आंसर हम कौन 30 ड्रिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अकॉर्डिंग टू पर्सी व्हाट इज आवर प्राइसलेस पोजीशन वेल्थ कैरेक्टर नॉलेज मनी ये राइट आंसर कौन हम 31 ऑप्शन सी हम कैरेक्टर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द राइटर एडवाइस स्टूडेंट टू द ट्रूथफुल एंड कंसिडरेट टू डैश फ्रेंड्स पेरेंट टीचर एवरीबॉडी ये आंसर कौन हम 32 एवरीबॉडी आंसर डी। A student should be kind and helpful to dash friend, poor and needy, weak and suffering rivals. The answer कौन होगा 33 ना weak and suffering. The writer tells the student to dash for what is good, pure and noble. The writer tells the student to dash. ये correct answer कौन होगा 34 stand up करे पे phrasal verb stand up. Dash is a mean game trying to get something for nothing and somebody's cost कौन होगा gambling होगा। एवं देखिबा 36 देछि कोन अकॉर्डिंग टू एली पर्सी लेजर आवर्स शुड नॉट बी स्पेंट इन डैश लेजर आवर्स शुड नॉट बी स्पेंट इन डैश एटी राइट आंसर कोन हम आइडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिबा पर्सी सेज दैट ए स्टूडेंट्स लेजर शुड बी स्पेंट इन रीडिंग एटी कोन रीडिंग कोन हम गुड बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिबा 38 अकॉर्डिंग टू द राइटर वन इज नोन बाय डैश द बुक्स वन रीड्स द जॉब वन गेट्स द कैरेक्टर वन पोजेसेस द कंपनी वन कीप्स ये आंसर कौन 38 द कंपनी वन कीप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 39 ए स्टूडेंट नीड्स ए साउंड माइंड विथ ए साउंड डैश बॉडी थॉट नॉलेज इनकम ये राइट आंसर कौन हम 39 ए बॉडी हम। लॉर्ड फैसी सजेस्ट टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग टू प्ले वर्क हार्ड प्ले एंड गेम एंड्योर पेन ये आंसर कौन हम ना प्ले द गेम हम। 41 लॉर्ड एस्टेस्पेरी पर्सी सेज टू बी डैश इन ऑल थिंग्स फेयर कंसिडर ट्रूथफुल हेल्पफुल ये राइट आंसर कौन हम ना ट्रूथफुल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिबा नॉइज होचे अवॉइड करिवो घर पाखरे कार काम चलछे आउ 3-4टा क्वेश्चन अछि मात्र। सक्सेस इन लाइफ इज नॉट इजिली डैश ये राइट आंसर कौन हम 42 ना सिक्योर्ड हम। 43 नंबर में देखिबा इफ पीपल आर डैश दे मस्ट कंटिन्यू देयर एजुकेशन द राइट आंसर कौन हम एम्बिशियस टू सक्सीड इन देयर एम्स। 44 देखिबा हमें ड्रिंक इज डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड डैश ड्रिंक इज द डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड डैश ये राइट आंसर कौन हम ना एफिशिएंसी। ए साउंड माइंड रेट्स डैश इन ए साउंड बॉडी ये आंसर कौन राइट आंसर ए साउंड बॉडी। प्रथम क्वेश्चन देखिए टीमो थुआ जे टीमो जो थिला से कौन थिला नाम थिला ना गोटे टाइगर कब। दिन देखिबा ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड टीमोथी डैश कोड ताको डिस्कवर करथिले ना इन द तराई जंगल। देन देखिबा हमें व्हाई वाज राइटर्स ग्रैंडफादर रिक्वेस्टेड टू अकम्पानी और ट्रैवल विथ द हंटिंग पार्टी
कहीं करथिले त आंसर कोन ऑप्शन डी हे जो बिकॉज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द सिवालिक हिल्स बेटर। देन देखिए हमें 4 नंबर द हंटिंग पार्टी कंसिस्टेड ऑफ डैश कंस्टिट्यूट ऑफ और वाज मेड अप ऑफ सेवरल इंपोर्टेंट पर्सन फ्रॉम कोड समस्त आसथिले त आंसर हो कोन ऑप्शन डी दिल्ली रु। देन देखिबा द कैंप ड्यूरिंग द हंटिंग ट्रिप हैड डैश लार्ज टेंट 15 सेवरल 7 ए फ्यू एटी आंसर हो कोन 5 नंबर ऑप्शन बी हे जिवो 7। देन देखिबा देयर वेयर सम डैश एलिफेंट्स इन द कैंप केतरे एलिफेंट थिला 7 15 11 10 एटी आंसर हो कोन ऑप्शन सी हे जिवो 15 15 टा एलिफेंट थिला। देन देखिबा हमें द मेन पर्पस ऑफ द हंटर्स वाज टू शूट डैश डियर वाइल्ड बोर्ड्स पिकॉक्स टाइगर को मान सब शूट करे पे त आंसर ला कोन 7 नंबर ऑप्शन डी हे जिवो टाइगर बाघ मान को मारे पे हंटिंग करे पे शिकार करे पे। ग्रैंडफादर डिस्कवर्ड ए लिटिल टाइगर डैश व्हाइल शूटिंग एट जैकल्स while resting under a tree, while taking to his co-hunters, while strolling down leisurely and the forest path alone माने केतबेल ताको डिस्कवर करथिले आंसर ला कोन while strolling down और strolling down ला कोन walking leisurely and slowly walk धीरे धीरे चली गला को फॉरेस्ट पाथ रे एलोन गला को टाइगर को से गोटे लिटिल टाइगर गोटे छोट बाघ छुआ को देखिथिले। द लिटिल टाइगर डिस्कवर्ड ग्रैंडफादर स्टूड डैश त ऑप्शन हैला कोन कोन अछि एमिति भी क्वेश्चन टाइप और देछि क्वेश्चन व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द लिटिल टाइगर डिस्कवर्ड बाय द ग्रैंडफादर केते त लेंथ ता थिला त आंसर ला कोन 9 नंबर ऑप्शन सी हे जिवो 18 इंचेस मात्र 18 इंची रो जो टाइगर छुआटा को से बाघ छुआटा को देखिथिले। द लिटिल टाइगर had hid in a big hole in the camp in the forest among the intricate roots of the banyan trees कोठी एटा को देखिथिले त आंसर ला कोन 10 नंबर ऑप्शन डी among the intricate roots of a banyan tree। Then देखिबा as the only member of the party grandfather had the distinction of dash having caught little tigers, having traveled in the party, having picked the little tiger up, having caught any animal dead or alive। एटी आंसर हो कोन 11 नंबर ऑप्शन डी जिवो having caught any animal dead or alive। देन देखिबा द टाइगर कब और बेबी टाइगर जो टाइगर कब कहते कोन बेबी जो छुआ बाघटा वाज नेम टिमोथी बाय टिमोथी त नाटा किए देथिले त आंसर इज कोन 12 ऑप्शन डी ग्रैंड मदर। देन देखिबा ताल त ग्रैंड मदर त ना टिमोथी देथिले। देन देखिए मैं 13 नंबर एट फर्स्ट द कुक ब्रॉट टिमोथी अप और टू केयर ऑफ एंटायरली ऑन रॉ मटन माने प्रथम तो कोन खाइयो देथिला रॉ मटन फ्लेश ऑफ पिजन्स माने पारार मांस कॉड लिवर ऑयल मिल्क ताको प्रथमे कोन कोन दउथिले त आंसर ला कोन केवल मिल्क दउथिले क्षीर दउथिले। टिमोथी लैटर ऑन वाज पुट ऑन ए डाइट और फूड ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल वाज द टाइगर कप डिड नॉट लाइक मिल्क काहे ताको देले द मिल्क प्रोवाइड इंडाइजेस्ट रिच फॉर द टिमोथी माने हेटा से पचै पानथिला द डाइट वाज वेरी टेस्टी टू इट द मिल्क गिवन टू इट हैड नो प्रोटीन। एडी आंसर कोन 14 नंबर ऑप्शन बी हे जिवो द मिल्क प्रूव्ड इंडाइजेस्टिव माने सेटा को पचै पानथिला टिमोथी। देन देखिबा हमें 15 at last Timothy was put on a diet of pigeons and pigeon माने पारा मांस दिया हतला आ कोन दिया हतला त आंसर कोन ऑप्शन सी रैबिट ठेकुआ। टोटो वाज ए डैश टोटो हला कोन ता घरे कोन थिला टोटो से गोटे थिला गोटे मंकी गोटे मांकड़ थिला टोटो। देन देखियो ग्रैंडफादर फाउंड द स्मॉल mongrel puppy dash in the forest on the road in the kennel under a tree एठी आंसर कोन 17 ऑप्शन बी जो on the road। देन देखिबा 18 में Timothy darted back or moved quietly with a spring jump. If the puppy barked at him, if the puppy came too near him, if the puppy teased him, if the puppy crawled on his back. एटी आंसर कोन 18 रो ऑप्शन बी हिचो if the puppy came too near बहुत पाखु आसिल कोन हबो darted back jump कर दोतला। देन देखिबा फाइनली टिमोथी allowed the puppy dash शेषरे से कोन अलाउ करथला टिमोथी आंसर हिचो कोन ऑप्शन डी टू crawl on his back and rest there। देन देखिबा इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर बिकम एंग्री डैश जतले से एंग्री हो जातला दिको लॉस्ट टेम्पर कर दोतला जतले टेम्पर टा लॉस्ट कर दोतला कोन करतला त आंसर इज 20 ऑप्शन डी टोटो क्लाइम्ड अप टू द कर्टन्स। देन देखिबा टिमोथी वन ऑफ द फेवरेट अम्यूजमेंट वाज डैश टिमोथी रो गोटे माने फेवरेट अम्यूजमेंट तारो कोन थिला त आंसर कोन 21 ऑप्शन बी हेजबो टू फॉलो एनीवन सीक्रेटली हु शुड प्ले विथ हिम। Then देखिबा 22 Timothy had dash in his glittering eyes the answer of 22 option a crafty look। Then देखिबा में when the writer took Timothy out for walks people on the road
got terrified, scared him away, walked parallel to him, walked at safe distance from. जेतले सो टिमोथी को मान बाघ छुआटा को नेकी जाउतले वॉक पे पीपल माने कोन करतले ना walked at a safe distance from them. देन देखिबा डैश वाज टिमोथीज फेवरेट प्लेस तार फेवरेट प्लेस थला कोटा द आंसर ऑफ ऑप्शन ए द ड्राइंग रूम. देन देखिबा टिमोथी मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल डैश एटी आंसर हो 25 ऑप्शन डी हे जिवो ऑन द लॉन्ग सोफा रे से कंफर्टेबल थिला टिमोथी. देन देखिबा 26 आमे टिमोथी एट नाइट स्लेप्ट डैश कोड से स्लेप्ट करथला माने सोथला त आंसर ऑफ कोन इन मोहम्मद्स क्वार्टर. देन देखिबा इन द मॉर्निंग टिमोथी बिकेम वेरी हैप्पी डैश माने से केते बेल बहुत हैप्पी हे जेतला त आंसर ऑफ कोन ऑप्शन ने व्हेन ही वाज मेड टू कम आउट. देन देखिबा व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 मंथ जेतला 6 मास हैला कोन सब देखा गला ना ए चेंज केम ओवर हिम एंड ही ग्रीव स्टेडली लेस फ्रेंडली माने से धीरे धीरे फ्रेंडली हेलानी. देन देखिबा 29 ग्रैंडफादर डिसाइडेड ग्रैंडफादर कौन डिसाइड कले कि टू ट्रांसफर हिम टू जोटे चिड़ियाखाना को ताको ट्रांसफर कर दे टिमोथी को गोटे चिड़ियाखाना को ट्रांसफर कर दे ग्रैंडफादर डिसीजन नेले. द जू एट लखनऊ वाज डैश फ्रॉम द ग्रैंडफादर्स हाउस जो लखनऊ जो जूटा केते किलोमीटर डिस्टेंस रे थिला त आंसर लगन ऑप्शन सी 200 माइल्स 200 माइल 200 माइल गोटे माइल लेके तो 1.6 किलोमीटर तले केते जो 16 दुणे 32 320 किलोमीटर पाखापाखि लखनऊ जो जोटा. इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट देयर वेयर टिमोथी एंड टिमोथी सहित आउ किए सब रही द आंसर है कौन द विट राइटर. देन देखिबा द जू अथॉरिटीज वेयर वेरी हैप्पी टू सी टिमोथी टू वॉक टू गो ग्रैंडफादर टू रिसीव ए वेल फेड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर एज गिफ्ट टू ग्रेट ग्रैंडफादर एंड टिमोथी माने कहीं से बहुत खुशी होते जू अथॉरिटी माने कहीं से टू रिसीव ए वेल फेड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर गोटे सिविलाइज्ड टाइगर ताको पाइके से बहुत खुशी होते राइटर थ्रू. द नैरेटर्स ग्रैंडफादर माने नैरेटर ग्रैंडफादर द नैरेटर्स ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ तार पे केते दिन पर से गले ग्रैंडफादर ये आंसर हम कौन 33 रो ऑप्शन ए हे जिवो अबाउट 6 मंथ 6 मंथ पर बा 6 मास पर गले देखिबा को. देन देखिबा 34 आमे अबाउट 6 मंथ्स लेटर ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ तापर लखनऊ गले कहा कहउथ पे से लखनऊ जाइतले ना टू विजिट रिलेटिव्स ये आंसर कौन 34 विजिट रिलेटिव्स. Arriving at Jew grandfather said hello Timothy, put his arm through the bar at the cage, stroked the tiger forehead, went straight to the cage of Timothy. माने से कौन करथिले जू रे पाखे पहुंच गई कौन करथिले से now went straight to the cage of Timothy cage को संगे संगे सेठी गले. Who said hello Timothy dash said एटा की कहथिला एटा आंसर ले कौन 36 रो ऑप्शन ए हे जिवो ग्रैंडफादर कहले कौन हेलो टिमोथी. द टाइगर इन द केज अलाउड ग्रैंडफादर डैश टू कीप हिम क्वाइट टू टेक हिज ईयर टू स्ट्रोक हिज फोरहेड टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड एट आंसर कौन 37 ऑप्शन डी हे जिवो टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड. देन देखिबा व्हेन एवर टिमोथी ग्रोड और रोड डैश व्हेन एवर जतल टिमोथी ग्रोड करथला कौन होतला त आंसर ले कौन 38 ऑप्शन डी हे जिवो ग्रैंडफादर स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ तो पार्टी पाखु धरे पकौले. ग्रैंडफादर ओल्ड वे ऑफ कीपिंग टिमोथी क्वाइट वाज डैश ग्रैंडफादर्स ओल्ड वे ऑफ कीपिंग टिमोथी क्वाइट वाज ये आंसर कौन 39 ऑप्शन सी स्मैकिंग और स्लैपिंग जेंटली हिम एक्रॉस माने धर नथिला पार्टी पाखु धीरे धीरे थापड़ देउथले. देन देखिबा द टाइगर इन द केज स्प्रैंग अवे और जंप्ड अवे डैश माने केते बेले से जंप हेकी पळेला द आंसर है कौन 40 ऑप्शन ए व्हेन ए लियोपार्ड इन द नेक्स्ट केज स्नेल्ड और रोड एट हिम जेतले गोटे पाखे जो लियोपार्ड थिला चित्ता गोटे रोड कला चिलेला गर्जन कला. द टाइगर इन द केज स्लिंग्ड बैक और मूव्ड बैक क्वाइटली टू हिज कॉर्नर व्हेन माने केते बेले गोटे कॉर्नर को पळेला द आंसर कौन 41 रो ऑप्शन ए द लियोपार्ड रस्ट एट द बार्स. देन देखिबा हम 42 ए नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड नियर द केज काहे कि आसले समझते आंसर है कौन ऑप्शन डी टू सी द रियूनियन बिटवीन ग्रैंडफादर एंड द टाइगर ग्रैंडफादर और टाइगर भितर रियूनियन पे समस्त देखा आसते. हु सेड प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन किए कहते कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने किए कहते ये आंसर कौन 43 ऑप्शन सी हो द कीपर ऑफ द जू. देन देखिबा ग्रैंडफादर वांटेड टू सी डैश अबाउट हिज टिमोथी ये आंसर है कौन 44 ऑप्शन डी द जू सुपरिटेंडेंट को देखा.
ग्रैंडफादर केम टू नो दैट द सुपरिटेडेंट मैंने से जानले सुपरिटेडेंट कौन हो जाता 45 आंसर कौन ऑप्शन बी हैड लेफ्ट फॉर होम अर्ली घर को पड़े बहुत जल्दी देन देखा ग्रैंडफादर हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी ये आंसर कौन ऑप्शन बी फॉर अबाउट 5 मिनिट्स 5 मिनट है ग्रैंडफादर सजेस्ट टू द innkeeper dash to take care of the stupid leopard to transfer Timothy to another cage to take a suggestion or two from him to stay relaxed माने से जो innkeeper को कौन कहते जो जगवाली ताको कौन कहते ना टू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज टिमोथी को अलग गोटे केज पे नहीं जावा को जनता पे द कीपर टोल्ड ग्रैंडफादर दैट टिमोथी डायड 2 मंथ्स एगो कीपर तापर कौन कहते ना टिमोथी 2 मंथ है ऑलरेडी मरी सारानी डैश माने ताको कौन हार्ट अटैक निमोनिया सीरियस वुंड्स अपेंडिक्स कौन ताको होइदैतला ना ताको निमोनिया हो जाइतला काको टिमोथी को तेज से मर जाइतला देन देखो ग्रैंडफादर वॉकड आउट ऑफ द जू ब्रिस्कली और क्विकली थ्रोइंग डैश एट द कीपर ए डिस्टिंग्विश्ड लुक ए फनी लुक ए स्क्रोनफुल और ए हेडफुल लुक ए चीयरफुल लुक माने केमती ताको देखिके पळे आस्तले ना ए स्क्रोनफुल और ए हेडफुल लुक देन देखिबे हम 15 नंबर द टाइगर इन द केज वाज कॉट डैश ओनली लास्ट मंथ एटा को कोठो एटा को आना है लास्ट मंथ माने शेष मंथ गोटे माने गोटे मास पूर्व एटा कोठो आना है रखा है केज रे टे आंसर अब कोन इन द हिल्स रु आसिक लास्ट मंथ आसिक रही एक्चुअली जो टिमोथी जो से मर जाइए 2 मंथ्स पूर्व एटा गोटे नुआ आसिक रही लेखक ग्रैंडफादर जानि पार नथिले beggar told that he was poor and से poor आ कोन थिला ऑप्शन सी हो hungry the beggar told the advocate that he had no dash for a lodging एडी आंसर हो कोन ऑप्शन सी हे जबो 5 kopecks then देखिबा at first the beggar told the advocate that he was dash for 8 years a singer and village school teacher an expelled student a wood chopper एडी आंसर हो कोन ऑप्शन बी and village school teacher then देखिबा 4 नंबर the beggar told the advocate that he had lost his job through dash a trick a strategy a plan and integrity the answer of 4 number option D हिजबो integrity Sergei was a or an dash पे माने प्रोफेशन तर से प्रोफेशन कोन थिला Sergei the answer of 5 रो option D हिजबो advocate then देखिबा the so called beggar or a ragged torn and dirty माने ragged ला कोन torn and dirty and a dash overcoat the answer of 6 रो ऑप्शन ए हिजबो फन कलर्ड द सो कॉल्ड बेगर और ए रैग्ड एंड फन कलर्ड ओवरकोट द बेगर हैड डल एंड डैश आईज केमती के तरह आई गुरा थिला द आंसर ऑफ कोन ड्रंकेन माने मद पीले जो पीवा निशासक्त व्यक्ति को भले आखि गुरा सब देखाउतला द बेगर टोल्ड द एडवोकेट दैट ही हैड टू बेग obliged by dash the beggar told the advocate that he had begged obliged by dash choice his boss circumstances laziness एटी आंसर हो कोन 8 नंबर ऑप्शन बी हिजबो circumstances then देखिए हमें 9 नंबर Sergei suddenly remembered something when केतेबेल समथिंग रिमेंबर कला त आंसर हो कोन ऑप्शन बी his eyes fell on the man's overshoes then देखिबा the proofs that he was a village school teacher the beggar was prepared एडी आंसर ऑफ ऑप्शन बी टू शो हिम हिज पेपर्स देन देखिबा इन सदव्य स्ट्रीट द सो कॉल्ड बेगर सेड दैट से कौन कहतला जो बेगर ता आंसर ऑफ ऑप्शन ए ही हैड बीन एन एक्सपेल्ड स्टूडेंट देन देखिबा Sergei turned away from the ragged creature with an expression of केमिति के एक्सप्रेशन देखि सेठू दूरे असला ता आंसर ऑफ 12 रो ऑप्शन सी हे जिवो डिस्गस्ट और इरिटेशन देन देखिबा एट लास्ट द सो कॉल्ड बेगर टोल्ड द एडवोकेट दैट फॉर्मरली ही sang dash एटी आंसर ऑफ ऑप्शन ए हे जिवो इन ए रूसियन choir the beggar who sang in the Russian choir man ta Russian choir ले कोन ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट was dismissed due to काहे कि डिसमिस हेतला ता आंसर कोन 14 ना disgust due to disgust at last the so called beggar agreed to dash for Sergei kon become a woodcutter chop wood for him do the work without bread it answer of 15 no option B hijbo chop wood for him rubbing his hands the advocate Sergei called his dash out of the kitchen wood chopper companion cook beggar it answer of 16 ro option B hijbo cook 17 में देखिबा Sergei ordered Olga dash
ओल्गा को से कौन आदेश देता ती आंसर हम कौन ऑप्शन डी टू टेक द जेंटलमैन इनटू द वुड सीड एंड लेट हिम चॉप वुड। देन देखिए द बेगर हैड बीन ट्रैप्ड बाय डैश द बेगर हैड बीन ट्रैप्ड केम से ट्रैप्ड हो जाता आंसर हम कौन हिज ओन वर्ड्स। द बेगर स्ट्रेंथ हैड बीन स्पॉइल्ड बाय टॉयल सेम वोडका हंगर मैंने वोडका है कौन ना स्ट्रॉन्ग रूसियन लिक्योर जो मद ये आंसर हम 19 ऑप्शन डी वोडका ए स्ट्रॉन्ग रूसियन लिक्योर। Sergei hurried into the kitchen, the dining room, the wood shed, the furniture room. ये आंसर होगा 20 ऑप्शन बी the dining room। देन देखिबा Olga glared at so called beggar the wood chopper। जो अंडरलाइन glared माने कौन looked angrily sadly माने glared माने कौन एठी looked केमित देखिबा angrily sadly happily disappointedly ये आंसर होगा कौन ऑप्शन ए जो angrily looked angrily है कौन ना glared। देन हमें देखिबा ओल्गा एंड द बेगर मेड देयर वे अक्रॉस डैश टू द वुड सेड द डाइनिंग रूम द डार्टी स्नो द किचन द गार्डन ये आंसर हम ऑप्शन सी हो द डार्टी स्नो। Sergei felt a little sorry and dash of himself at the sight of the beggar ये आंसर हम 23 ऑप्शन डी ashamed। Sergei felt a little sorry and ashamed of himself dash to work at menai है menial है कौन pretty labor in the cold ये आंसर हम 24 ऑप्शन बी हो having set up spoiled drunken and sick men to work at menial labor in the cold। then देखिए 25 an hour later Olga came in and announced that came माने आसिकी कौन अनाउंस करथिला आंसर हो 25 ऑप्शन डी द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड सब तक काठ कौन होछि ना चिरा होइछ। आफ्टर ओल्गा हैड टोल्ड सर्जे दैट ही टोल्ड दैट आफ्टर ओल्गा हैड टोल्ड सर्जे दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड द एडवोकेट आस्क्ड हिज कुक डैश ये आंसर हो कौन ऑप्शन डी हो टू गिव हिम हाफ ए रबल। On the first of the month the wood chopper made his appearance and earned केते टन से अर्न कर परथिला एटी आंसर होबो कोन ऑप्शन बी हाफ ए रूबल। रूबल है रशियन जो करेंसी को रूबल कहते हमर इंडियन करेंसी थिला कोन इंडियन रुपी सेमती रशियन करेंसी को हम रूबल बोल कहबा। बिसाइड चॉपिंग वुड द मैन वुड बीट द डस्ट आउट ऑफ रॉक्स एंड मैट्रेसेस सोभेलेला कोन क्लियर है स्नो एंड डैश एटी आंसर होबो 28 ऑप्शन डी हेजबो पुट द वुड सेड इन ऑर्डर। Occasionally the advocate sent dash to the man to his wood chopper it answer of 29 option C a pair of old trouser। then देखिबा Sergei dash when he moved into another house it answer of कोन option B हिजबो hired his wood chopper to the help in the packing and nailing of the furniture। Lushkoff was the name of Lushkoff है कहा ना the answer of the wood chopper ना है लगता कौन Lushkoff। then देखिए Sergei the advocate hired the wood chopper to help dash it answer होगा 32 option C in the packing and carrying the furniture with difficulty। then देखिए 33 well I am happy that my words have been taken effect Sergei said dash माने केमती ताको कहथिलेटा स्कोल्डिंग ता उसको माने भर्सना करिकि हैंडिंग द वुड चॉपर ए रबल सेंडिंग हिज वुड चॉपर ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स ट्रैप टैपिंग लक्सकॉफ काइंडली ऑन द शोल्डर एटी आंसर हो कोन 33 रो ऑप्शन बी हेजिबो हैंडिंग द वुड चॉपर ए रबल। देन देखिबा 34 हमें व्हाट वाज द क्लीनर एम्प्लॉयमेंट गिव टू लक्सकॉफ फ्रॉम सर्जे एटी आंसर हो कोन ऑप्शन ए जॉब ऑफ कॉपिंग। देन हम देखिए 35 Sergei advised Lushkoff man तो कौन एडवाइस देथिला टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक टू प्रोसीड ऑन द राइट पाथ टू स्टिक टू द ट्रुथ ये आंसर कौन 35 रो ऑप्शन बी हेजिबो टू वर्क हार्ड एंड नॉट टू ड्रिंक। देन देखिबा हमें व्हाई वाज द एडवोकेट प्लीज्ड ये आंसर हो कौन 36 रो ऑप्शन डी हेजिबो एट हैविंग पुट ए मैन ऑन द राइट पाथ। देन हमें देखिबा आफ्टर 2 years on evening Sergei was found standing dash कोड स्टैंडिंग हम ताको पाइथिले ना एट द टिकेट विंडो। देन देखिए हमें ए लिटिल मैन स्टूड बिसाइड Sergei wearing a coat collar of curly fur and dash a milly cap overshoes a turban a sealskin cap it answer होगा 38 ऑप्शन डी जो a sealskin cap। The little individual or Lushkoff was paying dash for his ticket it answer होगा 39 ऑप्शन ए copper coins। देन देखिए later year Lushkoff the wood chopper worked as a judge lawyer notary pescar it answer कौन 40 रो ऑप्शन बी हेजो ए नोटरी।
आज नोटारी लस्कफ वाज पेड डैश केते टका से पाउथला सेठू लस्कफ नोटारी रु जॉब करिके आंसर हम कौन ऑप्शन सी 35 rubles. I am very glad very happy indeed dash at this एटा किए कहितला त आंसर हम कौन Sergei. देन देखिए हम 43 Lushkoff thanked his master Sergei dash for his kind words, for his noble words, for his kind words and deeds, for his simplicity. कहीं से ताको thanked करथिला त आंसर हम कौन ना for his kind words and deeds. देन देखिए Lushkoff told Sergei that he stopped dash at the sight of Olga smoking, scolding, drinking, roasting, using angry words. It answer of 44 option B से मद भी छाड़ देथिला. Owing to or because Olga words and dash a change took place in Lushkoff's noble needs, honesty, sobriety, simplicity. It answer of 45 option A noble needs. Then देखिए Olga addressed Lushkoff a or an dash creature unlucky, wronged, unhappy, miserable. एटी 46 आंसर हम कौन ऑप्शन डी हो miserable. 47 देखिए a word used for drunkard in the unity of topic is creature, sort, chopper, notary. एटी आंसर हम कौन 47 ऑप्शन सी sort. There goes the bell, saying the Lushkoff bored and waved at his master, departed to the gallery, disappeared, smiled at Sergei. तापर कौन करथिला ना departed to the gallery को से पळैथिला. एक नंबर अछि कोन certainly have a panchayat by all means. I also would like a decision. Who said this? Certainly have a panchayat by all means. I also would like a decision. Who said this? एटा की कहतले त आंसर हो कोन ना जुम्मन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें for a dash days the aunt ran from village to request people to support her. त आंसर हला कोन ना several days. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the aunt ran from village to village with a dash in her hand. कोन से हैंड नहीं जातले ना stick. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 4 नंबर how did most of the people react to the old woman's story? केम सो रिएक्ट करथले ना they did not hear it carefully, they did not hear it with attention, all of the above. After making her sounds the aunt Ron at last came to dash कोड गेतले ना Algu Chaudhary. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा after coming to Algu Chaudhary the aunt waited for a while to dash. it right answer होबो कोन ना regain her breath. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 7 नंबर Son, you also should come to my panchayat for a short while, which addresses sons in the statement. Son बोली काहू का जायछि त आंसर ले कोन एठी ना Algu Chaudhary. नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हमें Algu Chaudhary agreed to come to the panchayat and told the aunt that he would dash support or not support Jumman, not open his mouth there, be the punch. It right answer होबो कोन not open his mouth there. Next question देखिबा the aunt's word echoed in Algu's heart. What would he have decided then? तब से कौन डिसाइड करतला the right answer होबो कोन he should say the honest thing. He should say the honest thing. Next question हम देखिबा 10 नंबर who had an old aunt एटी right answer ले कोन Jumman Sheikh. Who had a small piece of property? Who has a small piece of property? It right answer la kona option D Jumman Sheikh's aunt. Next question देखिबा how had Jumman behaved with the aunt before the property was transferred to his name? It right answer la kona option A treated with great kindness and respect. Next question देखिबा after the property had been transferred to Jumman's name all dash vanished. It right answer होबो कोन ना kindness. जो kindness ता सब उभे जातला. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा 64 Jumman and his wife Kariman became harsh and rude to their aunt because कहीं harsh रहतले she lost the right to her property and was under their control. Next question देखिबा I cannot go on like this anymore. Who said this? I cannot go on like this anymore. Who said this? एटा की कहतले एटा राइट आंसर ला कोन the aunt कहतले. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 16 नंबर The aunt asked Jumman to give her some money so that the right answer होबो कोन होबो ना she would cook and eat separately. Next question देखिबा hearing Jumman's rude reply that money did not grow on trees there the aunt dash remained silent, grew angrily, could not decide what to do, claimed her property. It right answer ला कोन grew angry. Next question देखिबा हमें when Jumman refused to give her any money the aunt
threatened him to death, call a panchayat, report the matter to the police, go to the court of law, take back her property forcibly. एटी राइट आंसर कौन 18 ना कॉल ए पंचायत. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर. अलगू हैड नो रिप्लाई टू गिव टू द ऑन्स क्वेश्चन बिकॉज एटी राइट आंसर कौन ना व्हाट द ऑन सेड वाज ट्रू, जोटा ऑन कहते हैं सत था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द फास्ट पंचायत मेट डेस, वन मॉर्निंग, वन आफ्टरनून, वन इवनिंग, वन नाइट. एटी राइट आंसर कौन वन इवनिंग हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु स्पोक फास्ट इन द पंचायत, हु स्पोक फास्ट इन द पंचायत ना जुम्मन्स ऑन्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22. Whom would you like to be the punch? Who asked the question and whom? एटी राइट आंसर हम कौन द aunt to Jumman. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए let me not say anything now, aunt it is your show. Have anyone like Jumman said this dash. एटी राइट आंसर हम कौन ता राइट आंसर हम angrily. केमती कहले ना angrily कहला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर. हु प्रपोज द नेम ऑफ अलगू चौधरी एज द चीफ जज, एटी की प्रपोज करते तो राइट आंसर कौन दी ऑन्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज द चीफ जज इन द पंच टू डिसाइड द केस ऑफ ओल्ड ऑन्ट, एटी राइट आंसर है कौन ना अलगू. When the aunt named Algu Chaudhary as the chief judge, Jumman was dash surprised, overjoyed, sad, disappointed. एटी राइट आंसर है कौन overjoyed. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें when Algu Chaudhary was named the chief judge, Jumman was overjoyed because he thought the judge would be in his favor. As a friend, Algu Chaudhary would support him. Algu Chaudhary would fear a quarrel for the sake of his friendship. एटी राइट आंसर है कौन ना ऑल ऑफ द अबव तीनटा को ठीक अच्छे. The aunt said to Algu Chaudhary that nobody can sell his dash for friendship. The aunt said to Algu Chaudhary that nobody can sell his dash for his friendship. Honesty, impartiality, consciousness and sincerity. एटी राइट आंसर है कौन ना कॉन्शियसनेस कॉन्शियस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ऑन्ट रिप्लाई टू अलगू चौधरी गॉड लिव्स इन द डैश ऑफ द पंच, एटी राइट आंसर है कौन ना हार्ट ऑफ द पंच. when he was named as the chief judge, Algu dash did not want to be mixed up in their affair, wanted to get out of it, told on that Jumman and we are close friends, all of the above. एटी राइट आंसर है कौन 30 all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें बट एट दिस मोमेंट यू एंड ओल्ड ऑन्ट आर एक्जैक्टली द सेम टू मी, हु इज द स्पीकर हियर, जुम्मन शेख, समझू साहू, प्रेमचंद, अलगू चौधरी. एटी राइट आंसर है कौन ना अलगू चौधरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए although Algu said that Jumman and his aunt are the same to him, Jumman was confident that he had won because he thought Algu was only joking. Algu's talk was mere show. Algu dare not give the judgment against him. Algu would change his view later. एटी राइट आंसर है कौन Algu's talk was mere show. Algu's talk was mere show. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33. with his dash at peace, Jumman Sheikh stated his case. with his dash at peace, Jumman Sheikh stated his case. एटी राइट आंसर है कौन ना हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34. in his judgment Algu said that dash कौन कहला जज अलगू कौन कहला तो राइट आंसर है कौन ऑप्शन डी हम द ऑन्ट शुड हैव ए मंथली अलाउंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द पंचायत इफ जुमन डिड नॉट एग्री टू पे द मंथली एक्सपेंसेस देन जब से नदब ताले कौन हम तो आंसर है कौन द प्रॉपर्टी शुड बी रिटर्नड टू द ऑन्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द डैश ब्रोक अप द फ्रेंडशिप बिटवीन जुम्मन एंड अलगू, द पंचायत, द ऑन्ट, द जजमेंट, द चीफ जज. एटी राइट आंसर है कौन द जजमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें आफ्टर द जजमेंट जुम्मन एंड अलगू डिड नॉट डैश इच अदर, लुक एट टॉक टू हेल्प क्वारेल विथ. एटी राइट आंसर है कौन ना टॉक टू से कथा हेलेनी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें आफ्टर द जजमेंट हु थॉट ऑफ टेकिंग रिवेंज, अलगू, बोथ ऑफ देम, जुम्मन, नन ऑफ देम. एटी राइट आंसर है कौन ना जुम्मन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Algu had brought a pair of bullocks a few days before, a few months before, a year before, 2 years before. Right answer है कौन a year before. Next question देखिए one of Algu's bullock died only dash after Jumman's panchayat. One of Algu's bullock died only dash after Jumman's panchayat. 1 day, 2 weeks, 1 week, 1 month. एटी राइट आंसर है कौन ना 1 month. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर Algu's bullock had died, Jumman told his friend that it was a punishment for Algus. After Algu's bullock had died, Jumman told his friends that it was punishment for Algus. Dash dishonesty, disobedience, deception, discretion. एटी राइट आंसर है कौन डिसेप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें बॉयज Jumman said to his friends, God sees all the dash good, both of this evil, none of this. एटी राइट आंसर है कौन ना both of this.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अलगू चौधरी डिसाइडेड टू सेल ऑफ हिज सिंगल बुलक बिकॉज द अदर बुलक ऑफ द पेयर डाइड ए सिंगल बुलक वाज नो यूज ऑफ हिम ही वाज वेरी सैड एट द डेथ ऑफ हिज बुलक ही कुड नॉट टेक केयर ऑफ द सिंगल बुलक एटी राइट आंसर हला कोन ए सिंगल बुलक वाज ऑफ नो यूज फॉर हिम बट टू हिम समझू साहू used to dash to go to the market with different goods a trolley a tractor a cart and ikka एटी राइट आंसर हला कोन 44 रो an ikka नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट डिड समझू साहू कैरी टू द टाउन मार्केट इन जिका कोन कोन से सुने कि जाए ना घी एंड सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट डिड समझू साहू कैरी फ्रॉम टाउन टू मार्केट टू द विलेज इन इज इक्का एटी राइट आंसर हो कोन 46 रो ना सॉल्ट एंड ऑयल हबो कोन हबो सॉल्ट एंड ऑयल हबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हाउ मेनी ट्रिप्स ए डे डिड समझू साहू थिंक of market to the town after having the bullock एटी राइट आंसर हला कोन 47 रो ना 3 टिप्स तीनटा ट्रिप करियो बोल से भाबिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा समझू साहू प्रॉमिस्ड टू पे ऑफ द प्राइस ऑफ द बुलक इन डैश टाइम ए वीक्स 2 मंथ्स ए मंथ्स 3 मंथ्स एटी राइट आंसर हला कोन ना ए मंथ्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 49 समझू साहू मेड ए डैश ट्रिप्स पर डे समझू साहू मेड्स डैश ट्रिप पर डे एटी राइट आंसर कोन 3 or 4 Samjhoo Sahu was worried only about his trips to the town, gives fodder to the bullock, giving water to the bullock, taking proper care of the bullock. It is right answer कोन his trip to the town हवा. Next question देखिबा within dash the bullock become mere bag of skins and bones. Within dash माने a week month 15 days 2 months. It is right answer हवा कोन ए मंथ गोटे मास भितर सुखिकी डांग हो जाता हाड़ फाड़ देखा द बुलक बिकेम ए मियर बैग ऑफ स्किन एंड बोन्स दिस सेंटेंस इम्प्लाइज दैट इट स्किन एंड बोन्स बिकेम स्ट्रांग इट बिकेम वेरी ओल्ड इट हैड स्किन डिजीज बोन इंजुरी इट बिकेम एक्सट्रीमली थिन एंड वीक इट राइट आंसर कौन हम इट बिकेम एक्सट्रीमली थिन एंड वीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 53 During which trip did Samjhoo put a double load on the bullock one evening? Double load को ट्रिप रे से नदी देथिला त राइट आंसर हला कोन ना फोर्थ ट्रिप The animal was dead tired by the day's work. The animal was dead tired by the day's work. What does dead tired means? जो dead tired ता अर्थ हला कोन ना completely or fully tired. Next question देखिबा The bullock died because it was dash driven to her put double load during the all fourth trip one evening with the greatest cruelty. It right answer कोन all of the above हबो 56 देखिबा कोन देछि What was the price of the bullock? What was the price of the bullock? 150 rupees. Next question देखिबा when Algu asked for the price of the bullock Samjhoo paid it soon refused to pay it promised to pay it after 1 month none of the above. It right answer हला कोन refused to pay it. Next question देखिबा after the bullock had died Samjhoo and his wife said that Algu had given them a dash bullock diseased weak disabled dying. It right answer हला कोन dying. Next question देखिबा Algu Chaudhary was helpless when dash Samjhoo Sahu did not pay the price of the bullock his enemy helped Samjhoo Sahu the good people of the village did not help him the village panchayat did not take up his case एटी right answer हला कोन ना his enemies helped the Samjhoo Sahu his enemies helped Samjhoo Sahu. Next question देखिबा who advised Samjhoo and Algu to take the matter to the panchayat कि ताको परामर्श देथिले the good people of the village. Next question हम देखिबा who proposed Jumman sex name as the punch who proposed Jumman sex name as the punch एटी right answer हला कोन ना Samjhoo Sahu. Next question हम देखिबा while proposing Jumman's name as the punch Samjhoo Sahu stood up and thundered. What does thundered means here? जो thundered means है कौन है ठीक? The answer है spoke very loudly. Next question देखिबा the second panchayat sat to decide the case between Algu Chaudhary Jumman Sheikh and his aunt Jumman Sheikh Samjhoo Sahu Algu Chaudhary Samjhoo Sahu Algu Chaudhary Jumman Sahu से तार जो पुलक नेथला मर जायथला when Jumman became the judge he decided to dash give the judgment in favor Samjhoo Sahu give the judgment in favor of Algu Chaudhary stick to the truth and nothing but the truth take revenge on Algu Chaudhary एटी right answer है कौन stick to the truth and nothing stick to the truth and nothing but the truth माने केवल सत्यता को ही से धरियो Jumman's decision was the Samjhoo Sahu should Jumman's decision was that Samjhoo Sahu should कौन एटी आंसर होबो कौन ना pay the full price of the bullock. Next question देखिबा according to the opinion of the elders of the second panchayat and the viewers of Jumman the bullock died because dash केमतिटा मरथिला त राइट आंसर ला कोन ना
both of the above. It was driven toward, no proper arrangement was made to feed it. एठी दीटा को आंसर हबो. सचोट देखिबा, after you gave your decision I had become your mortal enemy. Who is the speaker here? After you gave your decision I had become your mortal enemy. Who is the speaker here? Algu Chaudhary, Samjhoo Sahu, Jumman Sheikh, Jumman's aunt. एठी राइट आंसर ले कोन ना Jumman Sheikh. Next question देखिबा, after the second panchayat had been over, Jumman felt sure that God himself dashed through the panchayat. See, speak, hear, feels. एठी राइट आंसर है कोन ना speaks. Next question देखिबा, Algu had no reply to the question of the old woman. Here the old woman is, जो old woman थे सी के हेले, तो राइट आंसर है कोन ना Jumman's aunt. Algu brought a very beautiful pair of bullocks from the fair at dash. Algu bought a very beautiful pair of bullocks from the fair at Dehra, Sadhubya, Batteswar, Lucknow. It is right answer of कौन? Batteswar. Next question देखिए, Jumman was behind the death one of the bullocks. Who said this? Jumman was behind the death of the one of the bullocks. Who said? Algu, Algu's mother, Algu's wife, Jumman's aunt. It is right answer है कौन ना Algu's wife. Whom did Algu suspect for having poisoned his bullock? Whom did Algu suspect for having poisoned his bullock? It is right answer है कौन ना Jumman. Next question देखिए, money does not grow on trees. Here Jumman said this to it is क्या कहते ता राइट आंसर है कौन his aunt. Next question देखिबा, Jumman was confident of winning the case since Algu Chaudhary, the nominated village judge, was his कौन से थिला ना फ्रेंड थिला. आंसर कौन ना ता फ्रेंड थिला. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी द विलेज जज. विलेज जज की लिखिथिले ना मुंशी प्रेमचंद. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु आर द कैरेक्टर्स डिस्क्राइब इन द पार्ट ऑफ द स्टोरी. की गेट्स और डिस्क्राइब होचंती ना ऑप्शन बी हबो जुम्मन, करीमन, ऑन्ट एंड अलगू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु आर वेरी क्लोज फ्रेंड इन द स्टोरी द विलेज जज. एटी की दुई जन क्लोज फ्रेंड थिले ना जुम्मन एंड अलगू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु वाज जुम्मन्स वाइफ हेले के ना करीमन. द चिल्ड्रन फाउंड ए थिंग शेप्ड लाइक ए ग्रेन ऑफ ए कॉर्न इन ए कोड से पाइथिला ना रेवेन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिबा कौन देछि 2 नंबर, द वाइज मैन pondered and could not make head or tail of it. The wise man pondered and could not make head or tail of it. The underline words means pondered ता अर्थ होला कोन ना thought carefully. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन देछि, we can give you no answer. Who said this to king? We can give you no answer. Who said this to king? एटा की कहतले ना the learned man. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिबा 4 नंबर, the king's dash found a very old peasant, brought him to the king. The king's dash found a very old peasant, brought him to the king. The answer होबो कोन ना servants. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें, who tottered into the king's presence. Who tottered into the king's presence. की हो ना the very old peasants. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, when and where was such corn grown. When and where was such corn grown. The king asked this question to एज क्वेश्चन का पचारले when and where was such corn grown. The right answer होब कोन the old peasant's grandfather. Who suggested the king to ask the peasants about the grain. Who की man suggest करथिला. The answer हैला कोन the learned man. 8 नंबर देखिबा हमें, who was still able to see the grain and took. क्वेश्चन डाली भी जाछि 9 नंबर देखिबा, which question was asked to the wise man. को क्वेश्चन को पचरा जायतला ना what was the thing. Next question, when the hen pegged at the grain it was lying dash. When the hen pegged at the grain it was lying dash. एटी राइट आंसर कोन हबो on the window sill. Next question देखिबा, there was a dash down middle on grain of corn. There was a dash down the middle of grain of corn. The answer हबो कोन एठी group हबो. Next question देखिबा हम 12 नंबर, one day dash found the grain of corn in a ravine. One day dash found the grain of corn in a ravine. It right answer हबो ना some children.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द ओल्ड पिजन्स ग्रैंडफादर टोल्ड दैट दे न्यू नथिंग ऑफ डैश एटी राइट आंसर कौन हम ना मनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 14 नंबर सेलिंग और बाइंग ऑफ डैश वाज सिनफुल एक्ट इन ग्रैंडफादर्स टाइम ब्रेड कॉर्न फूड थिंग्स एटी राइट आंसर कौन ना ब्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द किंग आस्क्ड the grandfather to answer the king asked the grandfather to answer dash कौन आंसर करबे ना टू मोर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the grandfathers lived on a corn as big as a hen's egg in his dash days तो राइट आंसर हो कौन ना young days नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 17 नंबर in my time money was not yet in use who said this एटा की कहतले आंसर हो कौन the old pigeon's father नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the king bought the grain of corn from काटुडानले से the right answer हला कौन a traveler next question देखिबा the traveler bought the grain of corn from children for a dash right answer हबो ना a penny next question देखिबा a hole was made on the grain of corn by wise man a farmer a parrot a hen एठी right answer हबो कौन hen हबो a hen हबो he learned men sourced in their dash to know about the grain of corn the learned men sourced in their dash to know about the grain of corn it right answer hobo kon na books next question dekhiba the old pigeons who came to the king first used dash crutches it right answer kon hobo 22 ro na two crutches next question dekhiba the first old man was unable to dash the corn the first old man was unable to see touch taste feel it right answer hobo kon na C the old man's father came to the king with dash right answer kon na one crutch next question dekhiba I never sowed nor reaped any like it in my field nor did I ever buy such who said it I never sowed nor reaped any like it in my field or nor did I ever buy such who said it the old man the old man's grandfather the traveler the old man's father it right answer hobo kono the old man's father hobo in my time money was not in use was a statement of ta ki kahitile the old man's right answer hobo kono the old man's father hobo next question dekhiba hame the old man's father told that during their needs they dash the corn share buy sell lend it right answer kon hobo 27 na share 28 नंबर देछि the old man's grandfather came to the king dash it right answer होबो कोन ना without crutches next question देखि 29 it is a long since I saw such a fine grain who said this it is a long since I saw such a fine grains एटा की कहतले ना ता आंसर हला कोन the old man's grandfather next question हम देखिबा tell me grandfather when and where was such corn grown was asked by एटा की पचारथिला ता आंसर हला कोन the king buying and selling bread was considered as a dash during grandfather's time एटा कोन नॉट sin next question हम देखिबा 32 my field was God's earth wherever I ploughed there is my field was told by एटा की कहतले the old man's grandfather next question देखिबा the old man's grandfather told that during his time land was dash free valuable fertile infertile the right answer la kon na free according to the old grandfather in the old time men lived according to dash law human nature God's states the answer la kon na God's law next question देखिबा 35 in the past people coveted not what others had dash in the past people coveted not what others had it right answer kon hobo the right answer hobo kon na produced who was Asipel la kon the old peasants kon the old peasants next question देखिबा 37 one day some children found dash in a ravine kon paithile a thing shaped like a grain of corns next question देखिबा हमें the king called together his courtiers wise men minister learned persons the answer होबो कोन ना wise men 39 नंबर देखिबा हमें the thing shaped like a grain of corn looked एटा को भले गोट देखा जाउथला ना as large as hen's egg next question देखिबा the very old pigeons tottered into the king's court dash
आंसर हम कौन विथ द हेल्प ऑफ टू क्रचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु केम टू द किंग्स कोर्ट विदाउट एनी क्रच। हु केम टू द किंग्स कोर्ट विदाउट एनी क्रच। तो आंसर है कौन द ओल्ड मैन्स ग्रैंडफादर। द ओल्ड मैन्स ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम द ओल्ड पीजेंट्स ग्रैंडफादर स्पोक डैश डिस्टिंक्टली स्पीडीली स्लोली साइलेंटली। ये आंसर हम कौन ना डिस्टिंक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन वाज। अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर द ओनली थिंग मैन कॉल्ड देयर ओन वाज मैंने कौटा से निजर एकुटिया मैंने लोक मैंने कहींपारे। तो आंसर है कौन ना लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ग्रैंडफादर आंसर्ड दैट डैश वाज गॉड्स अर्थ। कोटा गॉड्स अर्थ। तो आंसर है कौन ना दी हिज फील्ड वाज गॉड्स अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 द स्टोरी ए गेन एज ए ग्रेन एज बिग एज ए हैंडशेक वाज रिटन बाय एटा किए लिखिछंती ना लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम हु केम वॉकिंग विथ वन क्रच। हु केम वॉकिंग विथ वन क्रच। ये आंसर हम कौन द ओल्ड पिजेंट्स फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 हु सोल्ड द ग्रेन ऑफ कॉर्न टू द किंग्स एज ए क्यूरियोसिटी। कि बिकते ना ए ट्राभेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आम द ओल्ड पिजेंट्स ग्रैंडफादर रिप्लाइड टू द किंग्स दैट डैश वाज फ्री लैंड वाज फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 द पर्सन हु केम टू द किंग्स कोर्ट विथ द हेल्प ऑफ टू क्रचेस वाज। दुईटा क्रचेस नहीं किए आनी तो राइट आंसर है कौन द ओल्ड मैन। तो कौन द ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन इन ग्रैंडफादर्स टाइम डैश वाज द ओनली थिंग द पीपल कॉल्ड देयर ओन। ये राइट आंसर है कौन ना लेबर। प्रथम क्वेश्चन देखिए इन द लेसन और टॉपिक ए ग्रेट सन ऑफ इंडिया द राइटर डॉक्टर एस राधाकृष्णन इन हिज स्पीच हाइलाइट्स द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ डैश। कार से लाइफ आउ टीचिंग्स सब हाइलाइट कर ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद। 2 नंबर आम देखिए according to the speaker Dr. S. Radakrishnan the student having won prizes and competed had the great opportunity of reading dash of Swami Vivekananda तांका सब राइटिंग गुडी को रीडिंग करे पे। देन देखिबा विवेकानंद was one of the great leader of dash ancient India Vedic India the Indian Renaissance modern India option C है जो Indian Renaissance। देन देखिबा the speaker Dr. S. Radhakrishnan in his speech congratulates the student in winning prize on reward on their dash writing achievement speeches recitation। it answer of option C achievement। who was Swami Vivekananda's great master। तांका great master किए थे ना श्री राजा राममोहन श्री रामहंस ऑप्शन बी। 6 नंबर देखिबा quotation of the Indian scriptures holy books and dash have strengthened the writing and speeches of Vivekananda। it answer of option A the saying of Sri Ramakrishna। then देखिबा the two dominant feature of our age are science and dash teaching scriptures speech democracy answer of option D democracy। in his speech Dr. S. Radhakrishnan says that educated people can't be told to accept the deliverance of faith without a dash wishful thinking intellectual conscience rational proofs spirit of science। it answer haba rational of reason or proofs। then देखिए 9 number without religious evidence our dash will be reduced to wishful thinking। it answer haba 9 number ro religious beliefs। 10 number में देखिबा modern man must learn to live with a religion impacted by intellectual conscience of right and wrong and dash। it answer of option A the spirit of science। 11 नंबर में देखिबा according to Dr. S. Radhakrishnan we can't command a religion if dash it divides man from man। जो religion टा man के man से divide करछि सेटा। then देखिए 12 नंबर the religious we are practicing today seem to be both undemocratic having no democracy and dash undemocratic ता सहित कौन it answer हम unscientific। then देखिए the only truth about life is it is dash greatness temporariness unfitness thoughts option C is temporariness। great civilization are subject to the law of dash nature process destruction time। it answer of option D time। the Indian tradition dash stands as symbol of birth and death। the Indian traditions life process history time। it answer of option D time। then देखिए unit 2 नाम सो when Vivekananda say by the Vedas no book are meant
he means dash से कहिए कौन चाहते ना no books need to be read if the Vedas are there. Then देखिए हमें 17 according to Vivekananda dash is yoga. Dash is yoga na religion is yoga. In the word of Swami Vivekananda, dash are ever expanding the Vedas, yogas, the spiritual laws, logical arguments. It answer of 18 option A, the Vedas. Then देखिए 19 हमें according to Vivekananda, religion is not dash orthodoxy, spiritual, social, intellectual, psychological. It answer of option B, intellectual orthodoxy. As Vivekananda points, soul religion is the awakening of dash in man. It answer of the life of spirit in man. Spiritual realization means knowledge of God or Almighty can be achieved or reached by practicing dash. Practicing any dash. It answer of option D, yoga. Then देखिए 22 हमें dash in the words of Vivekananda is an expression of religious concept or arrogance or pride. It answer of option C, intolerance. Why according to Vivekananda are not we secular truly? It answer of because we are indifferent to religion. Then देखिए secular calls for or requires understanding and loving other dash. It answer of option D, religions. While traveling abroad, Vivekananda felt very sad at India's dash in various fields. In secularism, backwardness, intolerance, superstitions. It answer of option C, backwardnesses. Then according to Dr. S. Radakrishnan, the end or death of man implies attaining or getting union with dash, religion, truth, untouchability, God. It answer about 26 option B, God. 27 देखिबा according to Dr. S. Radakrishnan, the ultimate or final test or true religion or dash. True religion हला कोटा ना realization or understanding of truth and harmony or co-living with human beings. Then देखिए 28 the overcome or defeat enemies we must discard dash. हमें कोटा को discard करिबा उचित ना enmity, violence or hatred. 29 देखिबा according to Vivekananda we can seek or with salvation or attaining good by practicing dash. It answer of options is service to man is service to God. Then देखिबा 30 हमें secularism means कौन? Secularism रो अर्थ होला कौन? ना regarding all religions sacred. Then देखिबा who is the speaker of the topic a great son of India? Dr. S. Radakrishnan. वीडियो टी भल लागले समस्त वीडियो को लाइक कर दबो संग मान सहित शेयर करिवो जो माने प्रथम थर पे वीडियो टी देखुछ चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखते बेल आइकन को प्रेस कर दो और टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हबो जॉइन हेल तमान सब वीडियो सब पीडीएफ फ्री रे पाइ पारो जितले मु जो अपडेट देबी तम सब विषय टी पाइ पारिबो. थैंक यू.